Assalamu alaikum and welcome to Syed Children's Academy, English Literature class of grade 7. It's your lecture number 3 and I'm your teacher, Miss Sabah. Dear students, as we are studying novel King Solomon's Mines, in your last lecture we have studied about chapter number 4, Strangers from the Stars, second part. So in this lecture we will study about the last third part of chapter 4, A Royal Welcome. A royal welcome, एक शाही इस्तकबाल. We came to a village where we would stop for the night. Outside the ground rose in a gentle slope, and here many companies of Kukwana soldiers stood to welcome us. It was a splendid sight. Each company had about 300 men by the time we reached the slope. 12 of these companies had taken up their positions along the road. हम एक गांव में आए थे जहां हम रात के लिए रुक जाते. वहां मैदान के बाहर एक नरम ढलान पर कुकवाना फौजियों के कई दस्ते हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े थे. ये एक हैरत अंगेज़ मंजर था. उनके हर दस्ते में तकरीबन 300 आदमी मौजूद थे. जब तक हम उस ढलान पे पहुँचे तकरीबन 12 दस्ते अब सड़क पर अपनी अपनी पोजीशन संभाल चुके थे. Presently we came to the first company. All the men in it were over 6 feet in height. On their heads they wore heavy black plumes of feathers. Round their waists and below their right knees were tied rings of white oxtails. In their left hands they carried round shields measuring 20 inches across. These were made of iron, beaten thin and covered with white oxhide. In the right hand they carried a short spear, and there was a knife in each belt and 2 more at the back of each shield. जब हम पहले दस्ते के करीब आए तो हमने देखा कि उसमें मौजूद तमाम लोग तकरीबन 6 फीट से ज़्यादा के थे. उनके सरों पर काले पंख मौजूद थे और उनकी वेस्ट और उनके नीस पर कुछ रिंग मौजूद थे. उन्होंने अपने उल्टे हाथ में शील्ड्स उड़ा रखी थीं जो तकरीबन 20 इंच के करीब थीं और वो लोहे की बनी हुई थीं और वो शील्ड्स ऑक्साइड से ढकी हुई थीं और उनके सीधे हाथ में वो एक छोटा नेज़ा थामे हुए थे और मज़ीद 2 तलवारें उनकी शील्ड में मौजूद थीं. Each company stood as still as statues until we were opposite it. Then its commanding officer, who stood in front wearing a leopard skin cloak, gave a signal. At once, 300 spears were raised in the air, and the word "Kom" was shouted by the 300 men. We found out afterwards that this word was royal greeting. As soon as we had passed, the company marched between us towards the village. At last, the whole regiment was marching behind us. As we went through the gate into the village, we noticed that all the women had come out to see us. They were tall and beautiful like their men. When we reached the middle of the village, Infidus stopped in front of a large hut. This was where we were to stay. Food and everything that we needed had been prepared for us. हर दस्ता मुजस्सिमों की तरह एक ही जगह खड़ा था जब तक हम उनके सामने नहीं आ जाते थे. उसके बाद उनका कमांडिंग ऑफिसर, जिसने लेपर्ड की स्किन पहन रखी थी, उन्हें कुछ इशारा करता जिस पर वो 300 नेज़े हवा में लहराते और उनके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलता, कोम. हमें बाद में पता चला कि कोम को शाही इस्तकबाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे ही हम उन दस्तों को क्रॉस करके आगे बढ़े और विलेज की तरफ जाने लगे तो हमने देखा कि पूरी की पूरी फ़ौज हमारे पीछे मार्च कर रही है. जैसे ही हम गांव के दरवाजे से अंदर आए तो हमने वहाँ की ख़वातीन को देखा जो अपने ही मर्दों की तरह लंबी और ख़ूबसूरत थीं. जब हम गांव के बीच में पहुँचे तो हमने देखा कि इन्फिडोस ने हमें एक बहुत ही बड़े हट के सामने रोक दिया है. यही वो जगह थी शायद जहाँ हमारे लिए रहने का इंतज़ाम किया गया था और खाना तैयार किया गया था.
Later that evening, the old gentleman came to see us. He was most friendly and polite. At first, he had been afraid of us and our appearance. However, it seemed to me that now, on discovering that we ate, drank, and slept like other men, he was beginning to get suspicious. It made me feel uncomfortable. शाम के वक्त एक बूढ़ा आदमी हमसे मिलने के लिए आया। वो बहुत ही फ्रेंडली था। शुरू शुरू में वो हमसे डर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि हम एक आम इंसान की तरह खाते पीते और सोते हैं तो वो हमारे बारे में शक करने लगा, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन सा हो गया। I asked an Infados when we would be continuing our journey and was delighted to hear that we would leave next morning. Messengers had already been sent to tell the king that we were coming. Tawala the king was at a place called Lu, getting ready for the great annual feast which was to be held in the first week of June. All the regiments meet at this feast and march before the king, and the great annual witch hunt is held. मैंने इन्फेडूस से पूछा कि आखिर हम अपना सफ़र कब शुरू करेंगे, और ये जानकर मुझे खुशी हुई कि हम सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। मैसेंजर्स को पहले ही यहाँ से रवाना कर दिया गया था ताकि वो तवाला बादशाह को हमारे आने की खबर दे सकें। तवाला इस वक्त जिस जगह मौजूद था उस जगह का नाम लू था, और वो उस सालाना दावत की तैयारी कर रहा था जो जून के पहले हफ्ते में होगी। इस दावत में सारे फौजी दस्ते आपस में मिलते हैं और फिर एक अजीम चुड़ैल का शिकार शुरू होता है। We were to start at dawn, and Infados said it would take us 2 days to reach Lu. Our visitors then wished us good night. We arranged to take it in turns to watch through the night. 3 of us lay down and slept, while the 4th sat up on the lookout for possible trouble. हमें सुबह यहाँ से निकलना था और इन्फेडस ने बताया था कि यहाँ से लू पहुँचने में हमें 2 दिन लगेंगे। तब सभी हमें गुड नाइट कहकर वहाँ से चले गए और हमने वहाँ रात गुजारने के लिए अपनी अपनी टर्न्स का इंतखाब किया। हम में से 3 लोग वहाँ सो गए और चौथा रखवाली करता रहा ताकि हम आने वाली मुसीबत का सामना कर सकें। Now, we have completed all the 3 parts of chapter 4. So let's see what is your home task. Here in your home task, you will do these word meanings in your literature copy. Here we have question number 1, 2 and 3. You will copy down these questions after word meanings in your literature copy. Here we have question number 4 and question number 5. You will do these 2 questions in your literature copy as well. Here we have question number 6. You will do it in your literature copy. That's all for today. Keep watching and keep learning with SSCA official YouTube channel. And to do that, please subscribe now and press the bell icon. I will see you in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.